millions by Jupiter. My name is Deepansha Dinghra. Today we'll talk about the favorite topic of Indian relatives. हो! कुड़ी दा व्याह नहीं होया हाले तक? कुड़ी दा व्याह कराओ? No, not this one. The other one. पुत्र, सैलरी कितनी है तेरी? सैलरी सिर्फ तो दिखा. अरे टिम्पी बुआ ने दिखाएगा. पहली बात तो आप पहले अपनी बेटी की शादी कराओ और फिर मुझसे बात करना. And second, nobody shows their salary slip. It's personal. In fact, it's so personal that even I don't see it. क्योंकि इतने कॉलम होते हैं, कौन देखे? वैसे भी जब अकाउंट में सैलरी आई जाती है तो पता तो चल ही जाता है. कौन सर पट के सैलरी स्लिप को समझने में? नहीं. You should know what gross salary, allowance, reimbursement, HRA, PF, insurance, etc. means. You must have read these columns in your salary slip, right? Then shouldn't you by now know what they mean? I mean, it's your salary slip after all. Not someone else's. जब हमें 12 लाख पर एनम के पैकेज वाली नौकरी मिलती है तो हम लड्डू तो पूरी दुनिया में बांट देते हैं, पर जनरली महीने के एंड में कट कुट के आता कुछ 85,000 है या उससे 1-2 ऊपर नीचे, तो बाकी का पैसा जाता किधर है? लड्डुओं में. Simple math suggests that you should get 1 lakh per month, but that's never the case. The deducted money distributes itself into those columns which you read only when the HR cuts like 60% of it in the month of March, and your chest starts aching immediately. Oh, there's one more instance when you check your salary slips. That's right, when you are changing jobs and are looking at that 30% increment. But then again, is that increment actually 30%? In hand आपको 30% ज़्यादा मिलेगा? Nobody knows. That's why it's important to read the offer letter before joining a company. We will get to the salary slip in a bit. Let's first understand the offer letter. आपने अक्सर अपने offer letter में CTC या gratuity जैसे भारी words पढ़े होंगे, पर क्या मतलब पता है इनका? या ये भी सिर्फ शशि थरूर को पता होगा? Let's find out what these terms mean. First, CTC. CTC का मतलब होता है cost to company. It is the total amount that a company spends directly or indirectly on an employee. It includes provident fund, various allowances, reimbursement, variable pay, bonus, insurance component, any employee stock options plan and even gratuity. जो आप 12 लाख पर एनम का पैकेज बोलते रहते हो ना, उसे टेक्निकल टर्म्स में CTC बोलते हैं. Second, gross salary. Gross salary is CTC minus your employer's contribution to EPF and gratuity. You don't get to see this column in your salary slip because it's gross. Okay, sorry, but seriously नहीं होता ये salary slip में. It's only there in your offer letter. Third thing that we see on the offer letter is टेक होम सैलरी. ये वो अमाउंट है जो हर महीने आपके बैंक में क्रेडिट होता है. योर कंपनी डिडक्ट्स अ पोर्शन ऑफ योर सैलरी फॉर टैक्स पर्पसेस एंड पे अदर टैक्सेस लाइक प्रोफेशनल टैक्स व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज अ मंथ एंड मेक्स अ कंट्रीब्यूशन इनटू अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट. ये सब कटने के बाद ही टेक होम सैलरी मिलती है. नाउ जो भी टैक्स कटता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन पे डिपेंड करता है. अगर आपने सारे सेक्शंस जैसे ATC, D, E, F, G सब में इन्वेस्टमेंट दिखाया है तो आपका टैक्स कम कटेगा, नहीं तो ज्यादा. Your tax slabs are also decided as per these investments. Next is gratuity. This term sounds very posh and that is why no one knows what it means. Gratuity is a payment you receive from the company if you resign after completing a minimum of 5 years of consecutive service with the company. It basically works like a reward for loyalty. If a company has the gratuity system in place, then no employee can opt out of it. However, आजकल ज्यादातर कंपनीज में ये ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि 5 साल में तो हमारे स्टार्टअप खुल के बंद हो जाते हैं. And even if that's not the case, gone are the days when people used to spend their entire life in a single company. आजकल तो 2-2 महीने में नौकरियां बदल लेते हैं. घर में ना प्याज ज्यादा चल जाते हैं इनकी नौकरियों से. After this comes insurance. काफी सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस देती हैं. इसका प्रीमियम वो आपके CTC में डाल देती हैं and it's borne by the employer. And therefore you must deduct this amount while calculating your take-home salary. Next and last is ESOP. Equity incentives or ESOPs imply options or rights of an employee to purchase a certain number of shares in a company at a predetermined price. ESOP benefits form a part of the employee salary income and are taxable as a prerequisite. पर ESOP को समझने के लिए हमें एक और वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि इतनी क्लैरिटी अभी मुझे भी नहीं है. So those were some of the terms that we use in the offer letter. Now let's move on to the main topic, salary slip. हाय रब्बा, पुत्र तेरी बेसिक सैलरी बड़ी कम है. फूफा जी से अप्रोच लगाऊं तेरी? आपको मेरी
सैलरी स्लिप किसने दी? जस्ट गिव इट बैक। और बेसिक सैलरी सबकी कम ही होती है। आप वो पेपर चला के आओ, आई विल एक्सप्लेन। बेसिक सैलरी इज यूजुअली 30 to 35% ऑफ द टोटल ग्रोस सैलरी। ये फिगर आपकी डेजिग्नेशन, इंडस्ट्री ऑफ वर्क और एम्प्लॉयर के मूड पे डिपेंड करती है। देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस एंड दिस कंपोनेंट इज फुली टैक्सेबल। द नेक्स्ट थिंग यू विल सी ऑन योर सैलरी स्लिप इज डियरनेस अलाउंस। आप कितनी बार ऑफिस में डियर बोलेंगे, ये अलाउंस उसी पे डिपेंड करता है। आई एम किडिंग। This is an allowance to adjust for increasing cost of living due to inflation. It's a cost that the government pays to public sector employees and pensioners, and therefore you may not find this component in a private sector company. This component is also fully taxable. उसके बाद आता है HRA। हाँ, वही वाला कॉलम जिसके लिए आपको साल में एक बार ऑनलाइन साइट से रेंट रिसीट निकाल के लैंडलॉर्ड के साइन कराने पड़ते हैं। The actual HRA is offered on the basis of these three provisions. First provision is 10% of your basic salary. Second, 50% of your basic salary if you live in metro city, otherwise 40%. And third, your actual HRA component. इनमें से जो भी कम होगा, that will be the HRA you can claim. इसके बाद आते हैं कन्वेंस और मेडिकल अलाउंस। 2018 से पहले लोग इन्हें डिक्लेयर करते थे और फॉर्म भी भरते थे, बट नाउ both of these allowances come under the flat standard exemption of 50,000 rupees. So if you spot them on salary slip, they don't matter much. ये ज्योमेट्री बॉक्स में रखे डिवाइडर की तरह है, बस है। However, लीव ट्रैवल अलाउंस यानी LTA की अच्छी खासी पहचान है अलाउंस की दुनिया में। It covers the employee and his or her family's travel expenses while on a holiday. जी हाँ, छुट्टी का खर्चा। It usually covers air and railway fares for travel within India and not any other expenses during travel. The LTA for tax exemption is applicable only up to 2 journeys in a block of 4 calendar years. The current block is 2018 to 2021. Other than these, there are many more allowances which companies give, like food allowance, gift voucher allowance, uniform allowance, phone and internet allowance, subscription for training allowance, etc., etc. But all of these allowances come under special allowance which you can reimburse at the end of every financial year. Now let's talk about the deduction column. Salary slip के deduction column में generally 3 ही चीजें होती हैं. First is TDS, which is tax deducted at source, and this tax is submitted by your company to the government. Second is professional tax, जो कुछ state governments लगाती हैं और ये generally 200 रुपए ही होता है। मैंने तो आज तक 200 के अलावा कुछ नहीं देखा। And the third deduction is EPF or PF, which is a mandatory savings plus retirement scheme for employees of an eligible organization. The employees must contribute 12% of their basic pay plus dearness allowance every month, and a matching amount is contributed by the employer as well. इसमें आपका contribution 80C के अंडर 1.5 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट है और इसे आप नौकरी छोड़ने के बाद भी निकाल सकते हो। और अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। जी हाँ, Ma'am, here, ma'am, should we change our tax regime? Ma'am, please, should we change our tax regime? बता रही हूँ। With too many slabs and too many rates, you can choose to stick to the old regime. अपना इन्वेस्टमेंट जैसे दिखाते थे वैसे ही दिखाते रहो और उस हिसाब से टैक्स भी भर दो। However, if you want to switch to the new tax regime, you have to forgo all the exemptions and tax deductions and just pay the new tax rates. सबकी calculations अलग से करनी पड़ेगी and it also depends on different components of salary slip. तो एक संडे को मामा जी के साथ बैठो और दोनों regime से calculate करके देख लो कि किसमें ज्यादा टैक्स बच रहा है और वो वाली regime चुन लो। पर एक thumb rule है, if you have exemptions or deductions that are tax free of rupees 2.5 lakhs and above, for example, you have standard deduction of 50,000 rupees plus 1.5 lakhs under ATC plus 50,000 as HRE, then you could be better off in the old regime irrespective of how much you earn. We have put a which tax regime suits you better calculator in our description, so you can check out that as well if your mamaji is not free. Experts believe that if you earn less than 7 lakhs per annum, then shift to new regime, otherwise old regime. So that's also one thumb rule you can follow. And if you're a freelancer or have any kind of additional income, तो फिर आप tax regime सिर्फ एक ही बार switch कर सकते हो. You won't get 3 lives like Super Mario. So choose carefully. Before I meet you in the next video, I'll summarize once again. Don't go for CTC. Always read and reread your salary slip or offer letter. A good in hand is not always the safest choice. Look at the employee's benefits as well. Check whether special allowances are performance based or fixed. And finally, one last thing. Never ask anyone's salary slip like my bua and marry whoever you want to. Okay? Bye! Thanks for watching this video. Like, share and subscribe to our channel for more such videos.
Please comment below with what you want us to talk about in our next video. Until then, goodbye.